Acha ji, we were talking about oxidation reactions in last lecture. We talked about Wexer oxidation, that is in which the acetaldehyde is produced from methane and oxygen. This is catalyzed by palladium 2 salt. We talked about this, that how palladium 2 is converted to palladium 0, and then palladium 0 is converted back to palladium 2 using cupric chloride. We also talked about asymmetric oxidations like Sharpless epoxidation reactions. So we talked about this in detail, that titanium based catalyst is used for the Sharpless epoxidation reactions. And you may see that there are actually stereoselective type of oxidation reactions. And because of this type of oxidation reactions and its development, Sharpless was awarded Nobel Prize for this. Mechanistically, we talked about this in detail. But in Sharpless oxidation, epoxidation, the allyl alcohols are converted to epoxides. Then we talked about Jacobson epoxidation, which is similar to Sharpless epoxidation. वही epoxides produce होते हैं, but here you are using aryl or alkyl substituted alkenes. So you may see that NaOCl is used as the oxidant, and the manganese ship base complex is used for the epoxidation process. We talked about its mechanism as well, that how it is proceeding toward the formation of the epoxides. Today, I'll be taking another very important reaction, that is alkene polymerization reactions. And these are industrially important reactions. uh, Polyalkenes, which are among the most common and useful class of synthetic polymers, are most often prepared by use of organometallic catalyst, either in solution or supported on a solid surface. अल्कीन पोलिमराइजेशन जो है ये दोनों तरीकों से होता है, मतलब या तो हेट्रोजीनियस अगर आप लेते हैं तो उस तरीके से भी होता है, और अगर आप होमोजीनियस लेते हैं तो तब भी होता है। तो सोल्यूशन फॉर्म में मतलब वही होमोजीनियस मीडिया, और सपोर्टेड सरफेस solid surface means heterogeneous. Majority of the alkene polymerization, they are done using the heterogeneous media, but nowadays people are working and have developed many reactions which are important for the alkene polymerization, and they are actually homogeneous in nature. The development of alkene polymerization catalyst in the second half of the 20th century, producing polymers such as polypropylene and polystyrene, ushered in, in a revolution in packaging materials, fabrics, and construction materials. You know that plastic industries, polymer industries, this is the main development of the 20th century, और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि पैकेजिंग, फैब्रिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है because of polymerization reactions. In 1950, J.P. Hogan and R.L. Banks discovered that chromium oxide supported on silica a so-called Phillips catalyst. इसको Phillips catalyst कहते हैं, chromium oxide को आप silica पे support कर देते हो. It is used for the polymerization of alkenes to polyenes. ठीक है, ये ये जो catalyst है Phillips catalyst, this is actually heterogeneous in nature. Also in the 1950s, Ziegler, working in Germany, developed a catalyst for ethene polymerization based on a catalyst formed from TiCl4 and aluminum ethoxide, sorry, ethylene illuminate. ठीक है, so triethylene illuminate. सो इसमें ये जो जीगलर है, इसने क्या किए, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को ट्राईटाइलिन एल्यूमिनेट के साथ रिएक्ट किया, एंड he developed a catalyst for the polymerization of ethene. And soon thereafter, G. Natta in Italy used this type of catalyst for the stereospecific polymerization of propene. फिर नाटा ने इसको क्या किया, he used this catalyst for the polypropene production. ठीक है, मतलब उसने तो पॉलीमराइजेशन के लिए, इथीन पॉलीमराइजेशन के लिए डेवलप किया था, लेकिन उसने प्रोपीन के लिए भी यूज किया. सो दिस कैटलिस्ट इज nowadays known as Ziegler Natta catalyst and is very useful catalyst for the polymerization reactions.
Both the Ziegler Natta catalyst and the chromium-based polymerization catalyst are widely used today. इन दोनों को भी नोबेल प्राइज मिला है इस चीज पे. आई फॉरगॉट टू मेंशन ओवर हियर, लेकिन ये इनको भी नोबेल प्राइज मेरे ख्याल से 1950s के अराउंड में इनको नोबेल प्राइज मिला. So you may see that how titanium tetrachloride is reacting with this is organometallic based. So you may see that triethyl aluminate is reacting with TiCl4 to produce a new type of the catalyst in which you may see that titanium is adopting octahedral geometry. लेकिन उसमें एक साइड जो है वो वैकेंट शो किया गया है. बाकी जो है उसकी चार उसमें क्लोराइड अटैच्ड है और एक साइड से इथीन का जो इथेन का जो इथाइल ग्रुप का जो CH2 है वो बॉन्डेड हो गया. बाकी एल्यूमिनियम के साथ एक साइड पे Cl अटैच हो गया. सो दिस इज दिस catalyst. In this catalyst, you may see that titanium and aluminum are bridged by CH2 and Cl groups. ठीक है, ये जो खाली साइट है ये एक्चुअली this is being used for the polymerization of the ethene. So when you add ethene to this Ziegler-Natta catalyst, this is converted to polythene. ठीक है, CH2 whole N वो फिर आगे जो पॉलीमर का जिस तरह शो करते हैं, दिस इज द monomer of the polythene. The full details of the mechanism of Ziegler-Natta catalyst are still uncertain, but the Cozy-Ullmann mechanism is regarded as highly plausible. Okay? The catalyst is prepared from TiCl4 and Al-C2H5-3, which react to give polymeric TiCl3 mixed with AlCl3 in the form of fine powder. The alkyl aluminum alkylates a titanium atom on the surface of the solid, and an ethene molecule coordinates to the neighboring vacant site. In the propagation step, ये अभी वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वही जो वैकेंट साइट है उसी के थ्रू जो है इथीन इसके साथ बॉन्डेड हो जाता है. फिर उसके बाद प्रोपिगेशन स्टेप आता है, वो अभी आप इसको देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगी. सो व्हाट हैपेंस, TiCl4 plus AlET3 जब हम डाल देते हैं, so this is producing this active catalyst with vacant site. What happens in the first step, ethene comes and coordinates to titanium center. So now ethene जब ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, so this is producing transition state with the alkyl groups attached to the ethene, titanium. So this is, you may see that this is titanium CH2, CH2 and CH2 with R group. ये एक cyclized product आपके पास प्रोड्यूस हो गया. Now this cyclized product, ये बॉन्ड इसमें टूट जाता है, ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट दे देता है. ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आ गया है ये फिर फर्दर फिर से एक वैकेंट साइट आ गया है, फिर से इसके साथ इथीन अटैच होगा और फिर से मतलब ये लिंक जो पॉलीमर की लेंथ है ये फर्दर प्रोसीड करती जाएगी, फिर एक और आएगा, फिर इस तरीके से, एंड देन it releases in the final step a polymer restoring the catalyst, and then again it is taking part in the catalytic cycle. तो इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि पहले स्टेप में क्या होता है, अल्कीन जो है वो टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, थ्रू पाई कम्प्लेक्सेशन करता है एंड प्रोड्यूसेस the titanium pi complex with the ethene. Then in the propagation steps for the polymerization, the uncoordinated alkene undergoes a migratory insertion reaction. फिर वही ethene को आपने देखा है, ये migratory insertion reaction और transition state से गुजर रहा होता है. So it is producing a transition state of the cyclized product. This migration opens up another neighboring vacancy, and so the reaction can continue and the polymer chain can grow. और ये जो cyclized product produce हो गया, this cyclized product then proceeds to produce the alkane, मतलब जो polymer का यूनिट है वो बन जाता है और वैकेंट साइट हो जाता है. अब ये वैकेंट साइट फिर से
अवेलेबल है फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इथीन, जो इस स्टेप से शुरू हुआ है, फिर से इसके साथ इथीन अटैच हो जाता है, फिर से ये स्टेप होता है, फिर से ये लेंथ जो है ये अभी 1 2 3 4 कार्बन पे मतलब अगर हम कह दें कि कंसिस्ट है, तो फिर एक और आ जाता है, तो फिर ये 6 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक और आ जाता है, फिर ये 8 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस लेंथनिंग अकर्स एंड दिस इज अ स्टेडी process producing the polymer. The release of the polymer from the metal atom occurs by hydrogen elimination and the chain is terminated. फाइनल स्टेप में जो पॉइजनिंग है और जो एंड टर्मिनेशन स्टेप है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट होगा। ठीक है, ये जो जीगलर नाटा कैटलिस्ट है, इसमें हाइड्रोजन जब एलिमिनेट हो जाता है, सो यू आर हैविंग दिस फाइनल स्टेप। Some catalysts remain in the polymer, but the process is so efficient that the amount which is remaining in the polymer is negligible. ठीक है, कैटलिस्ट पॉलीमर के साथ भी कुछ चला जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये negligible quantity में इस तरह होगा। Now, homogeneous catalyst related to the Phillips and Ziegler-Natta catalyst. ये जो है, ये जो आपने एग्जाम में पढ़ा है जीगलर नाटा कैटालिसिस, ये ऑलमोस्ट दिस इज ये तकरीबन थोड़ा सा हाइब्रिड कैटालिसिस है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको हेट्रोजीनियस मीडिया में काउंट करते हैं। आई टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन होमोजीनियस मीडिया, वो अभी आ रहा है, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से प्रोसीड करते हैं पॉलीमर्स प्रोडक्शन के लिए, जीगलर नाटा कैटालिसिस। ठीक है, नाउ द एक्चुअल कैटालिसिस विच इज होमोजीनियस इन नेचर दैट इज कमिंग। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, homogeneous catalyst related to the Phillips and Ziegler Natta catalyst provide additional insight into the course of the reaction and are of considerable industrial significance in their own right, being used commercially for the synthesis of specialized polymers. जो हम होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं वो भी इन्हीं की तरह काम करते हैं, लेकिन उनके और जीगलर नाटा या फिलिप्स कैटलिस्ट के दरमियान थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इस सेंस में होते हैं कि ये आपको एक स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉलीमर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो जीगलर नाटा कैटालिसिस है, ये आपको रैंडम पॉलीमर्स ज़्यादा देते हैं। ठीक है, मतलब किसी तरीके से उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए नए कैटलिस्ट डेवलप किए गए जिसमें पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी कंट्रोल किया जाता है, और ये सारे कैटलिस्ट ये होमोजीनियस है। Most examples are from group 4 titanium, zirconium, hafnium, and are based on a bis-cyclopentadienyl metal system. This is the title ring complex. Uh, this is zirconium cyclopentadienyl 2, इसके साथ ये अटैच है, एक CH3 एक L अटैच होता है, इज अ गुड एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है जो होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है। नाउ सी दिस इज द alkene polymerization using this catalyst. This is the zirconium based cyclopentadienyl based complex in which zirconium is over here. This has a bond with the CH3 CH CH2 CH3, ये इसके साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्डेड होता है। जैसी अल्केन मतलब मीथेन या प्रोपीन जो भी आता है, so this is bonding with the zirconium through pi complexation, which is again just like the Ziegler-Natta catalyst, this is passing through this cyclized product. You may see in this cyclized product zirconium C bond CH bonded with zirconium, and this is further bonded with CH2, then this is bonded with CH, and the H of the CH is attached to zirconium. So this is just like the Ziegler-Natta catalyst. What happens in the next step, this site is क्रिएटेड, और आपको जो पॉलीमर है वो उसकी लेंथ लिंकनिंग हो रही है, फिर से इस साइड पे जो ये वैकेंट साइट आ गया है, तो इस साइड पे फिर से इथीन अटैच होगा, फिर से ये लिंकनिंग होगी, और दिस विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द मोनोमर. These group 4
metallocene complexes catalyze alkene polymerization by successive insertion steps that involve prior coordination of the alkene to the electrophilic metal center. Catalysts of this type are used in the presence of the so-called methyl aluminoxide, aluminoxane, a poorly defined compound of approximate formula methyl LO whole N, which among other functions serve to methylate a starting chloride complex. Additional complication arise with alkenes other than ethene. इसमें ये जो चीज़ है ये मिथाइल एल्यूमिनोक्साइड ये यूज़ होता है बिकॉज जिरकोनियम क्लोराइड इनिशियली हम यूज़ करते हैं मतलब वो Cp का कम्प्लेक्स होता है और उसके साथ दो क्लोरीन अटैच होता है तो आप इसमें मिथाइल एल्यूमिनोक्साइड जब डालते हैं सो इट विल मिथाइलेट दिस जिरकोनियम और अल्काइलेट दिस जिरकोनियम एंड रिलीजिंग द टू क्लोराइड ग्रुप्स ठीक है फिर वो अल्कीन के साथ बॉन्डिंग करके फिर इस तरीके से फिर वैकेंट साइड क्रिएट करके आपको वो बना के देता है पॉलीमर अब जो पॉलीमर है हम ये कह रहे थे कि होमोजीनियस पॉलीमर्स और होमोजीनियस कैटलिस्ट फॉर द पॉलीमराइजेशन दे आर better than the heterogeneous media. Why? Because they are controlling the stereochemistry. Stereochemistry of the polymer, this is called tacticity. ठीक है टैक्टिसिटी हम कंट्रोल करते हैं इसमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सारे ग्रुप्स लाइक इक्वल ग्रुप्स वो एक साइड पे मौजूद होते हैं किसी भी पॉलीमेरिक यूनिट के और दूसरे किस्म के ग्रुप्स वो दूसरे साइड पे लोकेट करते हैं सो सच काइंड ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड आइसोटैक्टिक ठीक है ये पॉलीप्रोपाइलीन का एग्जांपल है तो ये पॉलीप्रोपाइलीन आपके सामने शो हुआ है जिसमें ये जो है ये ग्रुप्स एक साइड पे हैं और डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो दूसरे साइड पे है ये आप देखें ये सक्सेसिवली एक दूसरे की बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर की तरीके से शो किए गए हैं सिमिलरली अगर सिमिलर ग्रुप्स वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में लोकेट करते हैं लाइक this yellow ball is trans to this yellow, then this is trans to this yellow, then this is trans to this yellow. See this. This is a kind of trans positions for the similar groups. So when similar groups are arranged at alternate sites, so such a polymer is called syntactic polymer. ठीक है तो हम जो ये जिरकोनियम बेस्ड कैटलिस्ट यूज करते हैं अगर हमें चाहिए कि हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर प्रोड्यूस करें सो आपको एक जिरकोनियम का कैटलिस्ट आइसोटैक्टिक पॉलीमर प्रोड्यूस करेगा लेकिन दूसरा जिरकोनियम का कैटलिस्ट आप लेंगे तो उससे आपको सेंडियोटैक्टिक पॉलीमर प्रोड्यूस होगा ठीक है तीसरी किस्म का कैटलिस्ट यूज करेंगे वो आपको एयरटैक्टिक पॉलीमर प्रोड्यूस करेगा जीगलर नाटा कैटालिसिस में ये चीज़ नहीं होती जीगलर नाटा कैटालिसिस आपको ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो कंट्रोल करके नहीं दे सकता लेकिन पॉलीमराइजेशन बहुत एफिशिएंटली करता है सो नाउ if there is no arrangement of the similar species located on either side of the polymeric chain so such a polymer is called atactic polymer अब इसमें कोई भी ऐसे कोई वो नहीं है क्या कहते हैं pattern नहीं है like see this two yellow groups these are actually methyl groups so two methyl groups are located on opposite side whereas one methyl group is located on this side फिर अगर ये सेंडियोटैक्टिक होता तो इधर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे होते लेकिन फिर से एक लगा हुआ फिर से ये दो लगे हुए हैं तो सी देयर इज नो proper type of the arrangement of the groups on either side of the polymeric chain so such type of a polymer is called atactic polymer तो ये जिरकोनियम बेस्ड कैटलिस्ट जो हैं ये हम टैक्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं जो आपके फिलिप्स कैटलिस्ट हैं या जीगलर नाटा कैटलिस्ट हैं वो ये काम नहीं कर सकते बहुत आसानी से तो इसलिए हम होमोजीनियस मीडिया की तरफ चले गए if you people have any question regarding to this topic so you may ask